gentlemen, students and scholars, teachers and trainers, professors and professionals, honorable advocates, advertisers, administrators and advisors, respected ministers and managers, adorable doctor and doctors, and dear friends. Today it is very nice time, nice place, nice section. You are knowing the truth of science to spirituality with an objective of unity in diversity. Let us go through what is happening around the world, in our society, in the country. India wouldn't go to Pakistan, ICC says fourth both will now play at neutral Venus. Charges lie thick and fast after ugly scenes in Parliament in Ambedkar's name. Scuffle between MPs of ruling alliance and opponents, two from BJP in hospital. News from New Delhi, the winter session of Parliament described into chaos on its penultimate day on MPs of the NDA and the opposition India bloc accusing each other of denigrating the name of Dr. B.R. Ambedkar, shot and jostled with each other at the Makar Dwar, the main entrance to the building, resulting in injuries to two BJP MPs and complaints to police by the BJP and Congress, allegations and counter allegations and petitions to the Speaker, while the BJP alleged that the MPs, former Union Minister Pratap Chandra Sarangi and Mukesh Rajput, fell and sustained injuries after leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, pushed them. The Congress wrote to Speaker on Birla, claiming that Gandhi was physically manhandled by three MPs from the ruling party. The S. Phagnon Konyak, BJP MP from Nagaland, told Rajya Sabha that she really felt uncomfortable when Gandhi came in very close proximity to her during the protest. Leader of the opposition in Rajya Sabha. Mallikarjun Kharge wrote to the speaker saying he was physically pushed by BJP MPs and demanded inquiry. The chaotic scenes outside began. The unprecedented scenes distributed or disrupted parliament proceedings and it could not transact any business. In the afternoon, Congress MPs carrying photographs of Ambedkar tried to climb onto the dais of the speaker shouting slogans. Both the ruling and opposition MPs were shouting Jai Bhim slogans. The chaotic scenes outside began in the morning when MPs of the NDA and the India bloc held separate protests on parliament premises over Union Home Minister Amit Shah's remark about Ambedkar, while the NDA MPs were protesting at the Makkar Tawar. India bloc MPs led by Gandhi
and Priyanka Gandhi Vadra, carrying photographs of Ambedkar, came marching from the Ambedkar statue on the premises. While BJP MPs were on the steps leading to the entrance, opposition MPs led by Gandhi insisted that they be allowed to enter the buildings not through the space suggested by security personnel but through the center. When they could not, Congress MPs KC Venugopal, Hivi Adan Jyoti Mani S. Priniti Shinde and a few others climbed onto the wall near the steps to pictures of Ambedkar and shouted slogans. Security personnel were seen struggling to bring them down amid the commotion. Congress MPs led by Vadra sat in protest at the main gate of the old Parliament building. Even as both sides shouted slogans, I don't know if you have it on your camera, but at the entrance of Parliament I was trying to enter when BJP MPs tries to stop me, push me and threaten me. Nothing will happen to us by pushing and shoving, but this is the entrance of Parliament and it is our right to come here. The central issue is that they are attacking the constitution and are insulting Ambedkar's memory, Gandhi said. Amid the commotion, Sarangi fell down and sustained an injury on his forehead while being taken to hospital. Sarangi, who was bleeding from his forehead, said Gandhi, while entering Parliament, pushed an MP who in turn fell on him and injured him. Sarangi claimed that he was standing near the stairs when Gandhi came and pushed another MP onto him. Sarangi and Rajput sustained injuries in the scuffle and were rushed to the Ram Manohar Lohia Hospital medical superintendent Dr. Ajay Shukla said the two MPs were brought from Parliament with head injuries. Sarangi was bleeding profusely. He had a deep cut on his forehead and it had to be stitched. His blood pressure and anxiety level were high when he was brought in. He said Rajput also had a head injury immediately after which he lost consciousness. However, the MP was in his senses when he was brought to the hospital. His blood pressure levels had also shot up. Dr. Sukla said both of them are in the ICU. We are trying to stabilize them. He said Prime Minister Narendra Modi called up Sarangi and Rajput and inquired about their health. Several BJP leaders, including Union Ministers Rajnath Singh, Shivraj Singh Chauhan, and Prahlad Joshi, met the two MPs at the hospital. Visuals from the protest showed Gandhi walking up to a group BJP MPs who were trying to help. 69-year-old Sarangi, get up. Are you not ashamed? Rahul, you are resorting to Gundagardi, rowdy behavior. You posed an old man, BJP MP Nishikant Dubey was heard saying, he posed me Gandhi, countered Dubey while walking away. As the BJP accused Gandhi of injuring two of its MPs, Kharge wrote to the speaker that he was physically pushed by BJP MPs when he reached the Makkar Tower. Thereafter, I lost my balance and was forced to sit down on the ground. This inflicted injury on my knees, which have already undergone surgery. Subsequently, Congress MPs brought a chair and was made to sit on it. With great difficulty, with the support of my colleagues, I impelled to the house. At 11 a.m., I urge you to order an inquiry into this incident, which is an assault not just on me personally but on the leader of the opposition, Rajya Sabha and the Congress president, he said. In a separate letter to the speaker, a group of Congress MPs, including Venugopal, Kodi, Kunil, Suresh, and Manikantha Tagore, claimed Gandhi was physically manhandled by three MPs from the ruling party in clear violation of the privileges extended to the leader of opposition and infringes on the rights accorded to him in his official capacity as an MP.
Their conduct was not only a blatant assault on the personal dignity of Rahul Gandhi but antithetic to the democratic spirit of our parliament. We hope that you will treat this matter with utmost seriousness and take appropriate action, they said in a social media post. Congress MP Gaurav Goyal alleged that the BJP MPs have sticked in their hands. I saw with my own eyes how Kharge was being threatened and pushed, he said. Book Rahul for assault, to polish. BJP to police, Kong says Kharge knocked down. News from Express News Service, New Delhi. The showdown on the premises of Parliament Thursday reached police within hours with the BJP accusing Rahul Gandhi, leader of opposition in Lok Sabha, of physical assault and incitement, while the Congress, in a counter complaint, alleged that BJP MPs caused injuries to Mallikarjun Kharge, leader of opposition in Rajya Sabha, by pushing him to the ground. The complaints were filed at Parliament Street Police Station, New Delhi. DCP Devesh Mehla said the complaints were received in the afternoon and were being examined. No FIR had been registered until evening. BJP MP and former Union Minister Anurag Thakur said, "We have filed a complaint against Mr. Rahul Gandhi for physical assault and incitement." In Rajya Sabha, BJP MP from Nagaland S. Fangnan Konyik said Gandhi came in very close proximity to her during the protest and I really felt uncomfortable. She said he started shouting at me, which I feel is very unbecoming of the leader of opposition. On day 24 of fast, Daliwal faints. Doctors say his life hanging by a thread. Doctors offer water to Jagjit Singh Daliwal after he remained consciousness at Khanori Thursday. Remaining part of BJP's complaint to police accuses Rahul of assault. JP Nadda, leader of the House in the Rajya Sabha, said today the leader of opposition behaved in an undemocratic way. Our MPs were protesting and he was involved in a scuffle with them. A woman MP was pushed by the leader of opposition. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the leader of opposition pushed the MPs. MPs were pushed so hard that there was blood and they were hospitalized. BJP Vadodara MP Hemang Joshi in his complaint to police said that at 10 a.m. he along with Mukesh Rajput and Pratap Rao Sarangi and other MPs were peacefully demonstrating at the Makar Dwar entrance of Parliament. Leader of the opposition in the Lok Sabha arrived at the scene around 10:40 am to 10:45 am despite a request from Parliament security to take on the designated entry path. Shri Rahul Gandhi with a malicious intent to disrupt the protest and physically harm NDA members of Parliament ignored the instructions and forcefully marched toward the peaceful demonstrators. The complaint stated not only did Shri Rahul Gandhi and others violated the instructions of the security personnel to take a dedicated path to ensure safety concern of the protesting MPs, he also instigated other INDI alliance members to proceed with force and aggression towards the NDA MPs, putting the safety of the demonstrators in jeopardy. They intentionally used physical force to push members of
Parliament Shri Mukesh Rajput and Shri Pratap Rao Sarang and others who were standing on the narrow stairs at the entrance, Joshi said. He demanded an FIR against Gandhi and others for attempted murder, voluntarily causing grievous heart criminal intimidation and common intention. The Congress, on the other hand, accused the BJP of Gundagardi, defending Rahul Gandhi. Priyanka Gandhi Vadra told reporters, "We have been protesting for so many days and there is always space for people to enter freely. Today, for the first time, they means BJP MPs protested and stopped everyone and then indulged in pushing and Gundagardi and now to save Amit Shah's skin and they have started this conspiracy that Bhaiya has pushed someone right before my eyes. Karge was pushed and he fell on the ground. Then they pushed a CPI MP who fell on Kargeji. I thought it would have broken his leg as it was visible from his face and that he was hurt. The Congress too filed a complaint at Parliament Street Police Station alleging that BJP leaders misbehaved with Kharge. 84-year-old Dalit leader Mallikarjun Kharge was roasted on the misbehaved with Congress MP Pramod Tiwari said he was accompanied by party MPs Digvijay Singh Mukul Vashnik and Rajiv Shukla. In their complaint, the MP said that Kharge, Gandhi, Vadra, K.C. Venugopal and others were staging a peaceful protest against the scathing remarks made by Indian Minister Amit Shah. While the protest was completely peaceful in nature and marked by displaying placards and images of the late Dr. Ambedkar, certain unscrupulous MPs belonging to the BJP stood in the way of the protest march with the sole intention of causing ruckus. Despite this repeated attempts at disturbing the peaceful protest, the opposition MPs did not budge in their bid to stop the protest march. BJP MPs exerted physical force on Sri Khargeji by pushing him to the ground. This has inflicted bodily injuries to Sri Kharge G. Shri Neeraj Dangi and others. The complaint stated seeking an FIR against BJP MPs under section of causing hurt, assault and use of criminal force. India wouldn't go to park matches at neutral venues. Market Watch Sports Musical Morning. From the world of economy, why stocks slid after US Fed exceptional slower rate cuts? News from New Delhi. NITI Ayog suggests housing for workers near factory sites. Mill want to export 2 million tons of sugar amid price crash. States need to contain rationalize subsidy outgo, said RBI report. Rupee falls to all-time low of 85.8. Sensex Nifty tank over 1%. Average speed of freight trains is only 25 kilometers per hour, increasing it is of prime importance. Standing committee report. BJP MLA sought forgiveness and I have forgiven him. Who says Himachal government spends 84.90 lakh rupees on 7% cabinet rank. Spent rupees 30.70 crore on ads in year and a half, HP government says. Impose complaint ban on crackers, Supreme Court to Haryana, UP. Press Trust of India, New Delhi. The Supreme Court on Thursday directed the Uttar Pradesh and Haryana government to impose a complete ban on
fierce crackers until further orders. The bench comprises Justices Isoka and Augustine. George Massey was also informed that Grab 4 was restored in Delhi NCR due to the worsening air quality. Yet another blast outside a police establishment in Punjab second this week. In SGPC Pro panel, Badal's messenger SOD leader Jathedar decision already made new Rao views on farm front. Punjab equates the centre's draft policy to three scrapple laws. Support for Punjab farmers agitation grows in Haryana protest today. Supreme Court raps Punjab for not conducting medical test of Delhi while nothing has been done. Why are you sacrificing Punjab's son, damaging economy? BJP asked protesters. In the house of this winter themed and dominated people who made a mark speech that set a record and a heartening birthday dinner. Don't invoke him selectively. In Parliament, there is a battle over B.R. Ambedkar's legacy. Is this just about the current movement in politics, or does it represent an unease with his progressive legacy? Stop trying to turn the clock back. Dalits' worship of on idols like Ambedkar subvert the old order for the vanguards of the status quo. This is unthinkable. Don't invoke him selectively if you want to venerate Baba Sahib. Give credence to his idea of the nation. Aditi Narayan Paswan says the downside of the appeasement policies, the downside of the appeasement politics is that it is meant to keep the concerned demographic at marginal deprivation, ensuring that their demands are met but their hopes are crushed. Despite budget allocations, political relevance, and vote bank politics, dismal efforts in basic amenities such as education, health, and employment have ensured that the biggest minority in India is facing the same issues that they did 50 to 60 years ago. History is well witness to the rough ride of social justice in recent memory of those who made laws for equality and those who resisted, while the uploaders of old social orders are now being exposed. New history book also cast references in order to shield them. The real story is actually about a lingering mindset, more pervasive and more upsetting than we think, which makes remarks such as these slip through. Now, news from the world. What is happening around the world? Russia ready to compromise with Trump on Ukraine war, says Putin. Other side needs to be ready for negotiations, compromises. Russian President Vladimir Putin at his annual press meet in Moscow on Thursday. Combat medics treat Ukrainian servicemen injured in fighting in Donetsk region in a photo released by Ukrainian armed forces on Thursday. News from Reuters. US sanctions spark aerospace defense agency over long-range missile projects. Israeli strikes hit Sana Hodea in response to Houthi attacks. Myanmar Janta post-poll plan in talks with neighbors. Thailand says French mass rape husband of victims get 20 years in jail. 50 others found guilty. Trump rejects spending bill. Congress has to
days of overt shutdown. Forget Saucer and Samba, this caramel colored street dog in Brazil's new national icon. Now, news from Express Network. In Ambedkar, divided opposites finds common rallying cry. Congress MP Priyanka Gandhi Vadra and BJP MP Hemang Joshi with other India Bloc and NDA members during a protest on the parliament premises in Thursday. In parliament, Rahul walks up to SP MPs and their protesters come together, joined by AAP TMC too is on the same page. News from New Delhi. Discarding his usual white t-shirt for a blue colored one, Rahul Gandhi, who was leading a protest of India Bloc MPs in Parliament Thursday demanding the sacking of Home Minister Amit Shah over his remarks on Ambedkar in the House, walked up to a group of Samajwadi Party MPs. The SP MPs, including Ram Gopal Yadav in their trademark red caps, were staging a separate protest on the Parliament premises on the issue. Gandhi shook hands with SP MPs and the two protests soon merged. Around the same time, the Tribune Congress posted on one of its WhatsApp group a tweet by Vanchit Bahujan Agadi leader and Ambedkar's grandson Prakash Ambedkar thanking TMC Rajya Sabha leader Derek O'Grees for giving a privileged notice against Shah over his insulting remarks about Baba Sahib. Derogatory remarks against Baba Sahib will not be tolerated by those who revere him and acknowledge his non-paprile. The battle against the anti-Ambedkar mindset will be fought from the streets to parliament. Glad that Derek is a stakeholder in the battle against such mindset. Prakash Ambedkar wrote, Shah now is facing two privilege notices. The second moved by leader of the opposition in the Rajya Sabha and Congress, President Mallikarjun Kharge. Pushed by BJP MPs, they were standing with sticks. Rahul Kharge claims distraction from Adani issues. Nearly 13,800 black spots identified in the NHS, Gadkari says. Opponents no trust notice against VP rejected. Meet the BJP Rajya Sabha MP from Nagaland who has accused Rahul of hurting her dignity. How to secure entrance exams, stop leaks, expert panels, ideas. Ongoing transition in Syria. High cost of financial fiscal deficit, why the gold bond scheme could end. How to secure entrance exams, stop leaks, expert panel ideas. Abhinav Hari Govind from New Delhi, a seven-member panel headed by former ISRO Chairman Radhakrishnan has made a set of 101 recommendations to the Ministry of Education for conducting national level entrance exam in a transparent, smooth and fair manner. The panel was constituted by the ministry in June after the NEET UG paper leak. Here are some key recommendations made by a panel categorized thematically, limit NTA scope.
Valley's longest surviving militant among us, 5 killed in Kulgam encounter, nearly 13,800 black spots identified in NHS. Gadkari says. Blocked 18 OTT platforms for vulgar content. 8th edition of Pariksha Pe Charcha in January. New Delhi, the 8th edition of Prime Minister's Pariksha Pe Charcha will be held in January and its registration process has already begun. Union Education Ministry officials said on Thursday. Conceptualized to reduce examination stress and encounter students, teachers, and parents to celebrate life as an utsav. PPC has been a resounding success over the past 7 years. The ministry said registrations for PPC 2025 have already begun on mygov.in and will be open till January 14. It added. Pariksha Pe Charcha is an annual event in which Prime Minister Narendra Modi interacts with students appearing for board examinations. He answers queries related to exam stress and other issues. News from the editorial page of the Indian Express over Baba Saheb debating Ambedkar's legacy surely does him proud, not the push and show sound bite tokenism. In the wake of Parliament's spirited debate over what the Constitution means, the government and the opposition have now grappled, even literally in the name of B.R. Ambedkar. Two BJP MPs, Pratap Chandra Sarangi and Mukesh Rajput, are in hospital. The party alleges they were shot by a senior Congress leader Rahul Gandhi. The main opposition party in parliament in turn has accused BJP members of obstructing opposition leaders from entering parliament and injuring party chief Mallikarjun Kharge and other Congress members. At the center of the row is Union Home Minister. The brace to Moscow India Russia relationship is essential to prevent fracturing of a stressed global order. The India Russia relationship prevents the Russian bear from totally entering the dragon's den. Russia locked into servitude to Beijing's interest would be profoundly inimical for the world order. The West, in particular, India's outstretched hand grants Russia the ability to maneuver and allows it to avoid capitulating completely to China's demands. Russia expects a partnership of equals. India provides one, China does not. The writer is President Observer Research Foundation. Foreign policy trends in 2025 will be shaped by shift in a great power relationship. A new administration in the US could upend its relations with old allies in Europe and intensify the value with China. In an uncertain world, India plays a leading role in maintaining balance. The global community in watching New Delhi's efforts to restore stability to its troubled relationship with China and wonders whether the Indo-US dynamic will capture the energy that characterized it in Donald Trump's first term. In spite of all this, the most con- the most consensual bilateral relationship in 2025 will be between India and Russia. At the close of play in the game and outside of it, R. Ashwini remained true to his roots. Following COVID, one got to see different side to Ashwin. In the months spent in lockdown, like many others, he too had been gripped by fear. But it was the time when his magnanimity shone through when the 2020 IPL was in the UPI as several journalists including cricket writers lost their jobs in pandemic ensued induced layoffs. Ashwin heard about it and reached out to know if he could be of any assistance. It's not that serious. Googly
eyes on art. Murals in Oregon are a reminder. Public art is made better by the public. This is all about the Indian Express. Now let us go through Hindi news. सुप्रीम कोर्ट का आदेश, डल्लेवाल की स्वास्थ्य जांच कराएं। पंजाब सरकार, किसान नेता डल्लेवाल बेहोश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को पंजाब सरकार से कहा कि वह अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे 70 वर्षीय किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को स्वास्थ्य जांच के लिए राजी करें। न्यायालय ने उल्लेख किया कि इरोम शर्मिला ने भी चिकित्सकीय निगरानी में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा था। शीर्ष अदालत ने पंजाब हरियाणा के बीच कनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे डल्लेवाल का चिकित्सकीय परीक्षण नहीं कराने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि कोई भी किसानों को विरोध प्रदर्शन से डिगाने की कोशिश नहीं कर रहा है और अदालत केवल जन नेता डल्लेवाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। न्यायमूर्ति भुइया ने कहा कि नागरिक अधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला का मामला लें। उन्होंने चिकित्सकीय देखरेख में वर्षों तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इसी तरह डल्लेवाल भी चिकित्सकीय देखरेख में अपना विरोध जारी रख सकते हैं। अदालत ने बुनियादी चिकित्सा परीक्षण किए बिना ही डल्लेवाल के ठीक होने की बात कहने वाले पंजाब सरकार के चिकित्सकों के बयान का उल्लेख किया। पीठ ने पूछा, 70 वर्षीय एक व्यक्ति जो 21 दिन से भूख हड़ताल पर है और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है, उसको स्वास्थ्य ठीक है, ये कैसे हो सकता है? क्या आपने उसका रक्त परीक्षण, ईसीजी परीक्षण और आवश्यक जांच कराई है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, जब हम खुद संतुष्ट हो जाएंगे कि वह सुरक्षित है तो अदालत उनसे बात करेगी। किसान नेता डल्लेवाल बेहोश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष। कनौरी बॉर्डर पर किसानों और मजदूर की मांगों को लेकर मरणामृत पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आज 24वें दिन सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण बेहोश हो गए। उनको उल्टियां लगी जिस कारण वह गिर पड़े। डॉक्टरों और किसानों में अफरा तफरी मच रही है। डॉक्टर स्वैमान सिंह और उनकी टीम ने चाहे डल्लेवाल की सेहत को कंट्रोल कर लिया, परंतु हालात इमरजेंसी वाले बने हुए हैं। उधर आज इस केस की दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसके चलते दोनों मोर्चों के फैसले अनुसार किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एस एस एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। कहा कि किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए बने डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने 2006 में अपनी रिपोर्ट में दी थी, परंतु वह लागू नहीं की गई थी, इसलिए उस रिपोर्ट को लागू करवाया जाए। उन्होंने किसानों की 13 मांगें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। हरियाणा की खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन को दिया समर्थन। हरियाणा के 6 जिलों में रात्रि पारा 5 डिग्री से कम, 14 में शीतलहर व कोहरे का येलो अलर्ट। संसद परिसर में धक्का मुक्की, 2 भाजपा सांसद घायल, राहुल पर एफआईआर। ध्यान भटका रही है भाजपा, अमित शाह इस्तीफा दें, राहुल का कहना। जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगी आतंकवाद से मुक्ति, अमित शाह कह रहे हैं। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मार गिराई 5 आतंकी, 2 जवान। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में उत्तर प्रदेश को पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का दिया निर्देश। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर विवादित टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। भारत को अल्पसंख्यकों पर मिलती थी सलाह, अब हम अन्य देशों के देख रहे हालात, भागवत सेज। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर भारत की नज़र। ब्रिटेन की राजनीति में तूफान, महिला मंत्री पर रूसी लिंक से 429 अरब की रिश्वत लेने का आरोप। अम्बेडकर पर शाह की टिप्पणी को लेकर लोकसभा में हंगामा, केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत शुरू करे, भगवंत मान सेज। चीन ने भारत से संबंधों को सुधारने के लिए सहमति पर दिया जोर, पेचिंग से। महाराष्ट्र की पहली ट्रांसजेंडर महिला वन रक्षक बनी विजयदस मसावे, पुणे से। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस खारिज, नई दिल्ली से। अजित पवार एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, फडणवीस फ्रॉम नागपुर। संबल सांसद वर्ग की बिजली काटी, चोरी का मामला दर्ज, संबल से। नेता का चयन अटका तो अंतर्कलह से भी पार्टी को लग रहा झटका। हरियाणा विधानसभा
बाबरिया उद्यान में तकरार के बाद अमरिंदर सिंह ने किया अपने प्रदेश अध्यक्ष उदयभान प्रहार। कांग्रेस ऐसे ही झूठ का सहारा लेती रही तो 2029 में इसका कोई नाम लेना वाला नहीं बचेगा, नायब सिंह सैनी सेज फ्रॉम पुंडरी 19 दिसंबर। कांग्रेस के लोग अगर ऐसे ही झूठ का सहारा लेकर चलते रहे तो 2029 में इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। ये शब्द मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पुंडरी में विधायक सतपाल झांबा द्वारा आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, न नेता जो कांग्रेस को दिशा दिखा सके। कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर लोगों को वर्गलाकर वोट लेने का काम करती है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता ने कहने लगे थे कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खतरे में आ जाएगा, जबकि सच्चाई है कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को है। गत दिवस केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसद में विधानसभा संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब किया। कांग्रेस ने अपने 55 वर्षों के शासनकाल में गरीबों का शोषण किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कांग्रेस की पीढ़ी ने किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो संविधान की किताब को लेकर घूमते हैं, को ये नहीं पता कि पवित्र संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने देश को संविधान के अनुरूप चलाया है। इस मौके पर सांसद नवीन जिंदल, विधायक सतपाल झांबा, जिलाध्यक्ष मनीष कावड़ सदस्य मौजूद रहे। किसानों के मुद्दे का जल्द समाधान निकाले सरकार, हुड्डा सेस। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने पेट्रोल पंप की 2 मशीनों को तोड़ा। महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 4.5 लाख, 4 गिरफ्तार। रेवाड़ी में घुसा 5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू। रेवाड़ी से नो हिंसा कांग्रेस विधायक की अलग सुनवाई का आदेश रद्द करने की मांग खारिज। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग तथा पर्यटन विभाग के सौजन्य से राखी गढ़ी महोत्सव उद्घाटन समारोह का आयोजन 20 दिसंबर 2024 सुबह 11:30 बजे राखी गढ़ी पुरातत्व स्थल हिसार। मुख्य अतिथि श्री अरविंद कुमार शर्मा, विरासत एवं पर्यटन मंत्री हरियाणा। उद्देश्य सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से एक राखी गढ़ी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना एवं उसे बढ़ावा देना। आइए प्राचीन विरासत से रूबरू हों, इसे जाने पहचाने तथा लोक संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों, शिल्प प्रदर्शनियों, शैक्षणिक कार्यशालाओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाएं। निदेशालय पुरातत्व और संग्रहालय हरियाणा, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा। भारत का इतिहास और भारतीय सभ्यता ये सामान्य इतिहास बहुत से कहीं ज़्यादा प्राचीन और व्यापक हैं। इसलिए जैसे जैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं वैसे वैसे इतिहास की वैज्ञानिक पुष्टि हो रही है। अतीत को देखने के लिए दृष्टिकोण विकसित हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी सेज। वायुसेना के ट्रेनिंग विमानों में पायलटों की ट्रेनिंग में खामियां, सबसे बड़ा क्रिसमस उपहार। 21 दिवसीय संसद के शीतकालीन स्तर पर मेरे विचार। डेरेक ओ ब्राउन, संसद सदस्य टीएमसी संसदीय दल। गरीब की जोरू वाली स्थिति में है कांग्रेस, क्या अडानी पर लगे आरोप वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति को कमजोर करेंगे। अकेले रहना एकांत कारावास की तरह है। अकेलापन और सम्मान की कमी भी जानलेवा हो सकती है। करुणा और मिलनसारिता से रहना एक मानवीय गुण है, लेकिन त्रासदी तब होती है जब बुजुर्गों को उनको अपने बच्चे और परिचित त्याग देते हैं। हम एक परिवार और समुदाय में रहते हैं और हमारे दोस्त होते हैं। हालांकि हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा है यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। अकेला रहना एकांत कारावास की तरह है जो किसी सजा से कम नहीं है। कोई कितना टीवी देख सकता है, सोशल मीडिया पर चिपका रह सकता है, पर जब कोई अकेला होता है, उदासी महसूस करता है, तो वह हमेशा किसी ऐसे दोस्त से संपर्क कर सकता है जो न केवल उसकी बात सुनता है बल्कि सही सलाह देकर उसका मनोबल भी बढ़ाता है। आखिरकार दोस्ती रातों रात नहीं भूली जा सकती और इसे सालों तक बनाए रखना पड़ता है। भौतिक सुख सुविधाएं हमें अस्थायी संतुष्टि देती हैं, लेकिन आत्मा और मन के लिए भोजन का भी बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य अनुकूल वातावरण और परिपक्व मित्रों में रिश्तेदारों की संगति से आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने प्रियजनों का व्यक्तिगत स्पर्श और गर्मजोशी से जो मानसिक राहत देती है और पूरे शरीर को पोषण देती है। हरियाणा उत्तर प्रदेश में पानी की आपूर्ति में आई भारी कमी। हरियाणा से 2 गुटों के झगड़े में जेल से बाहर आई युवक पर फायरिंग। करनाल से
गन हाउस में ब्लास्ट, संचालन की मौत बहादुरगढ़ से। शहरी विकास की नई परियोजनाओं का खाका खींच रहे मनोहर लाल। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। रेलवे लाइन के पास मिली प्रत्येक सीट पर एक प्रत्याशी उत्तर चुनावी मैदान में सर्वसम्मति से होगी विजय। दादूवाल से कुरुक्षेत्र। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान एवं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के धर्म प्रचार चेयरमैन जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव में सभी वार्डों पर केवल एक ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे और वही सर्वसम्मति से विजयी घोषित हो गए। इस मुद्दे को लेकर संत महापुरुषों के आदेशों पर आज धर्मनगरी में सुशोभित ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी में सभा हुई, जिसमें सर्वसम्मति इस प्रस्ताव पर अपना मोहर लगा दी गई। पत्रकारों से दादूवाल ने कहा कि चुनाव को लेकर संत महापुरुषों के विचारों के अनुसार सभी वार्डों पर धर्म व गुरुमति से जुड़े लोगों को प्रत्याशी बनाने पर सहमति बनी है। इस प्रस्ताव को लेकर 24 दिसंबर को फिर से कुरुक्षेत्र में बैठक रखी गई है। दादूवाल ने हरियाणा से गुरुद्वारा चुनाव जो कि HS भल्ला साहब द्वारा चुनाव लड़ने वाली पार्टी का नाम अकाली श्रोमणी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अकाली श्रोमणी शब्द से कौम के इतिहास से जुड़ा है। ये हमारे धर्म गुरु मर्यादा व परंपराओं में दखलंदाजी है जो मंजूर नहीं है। भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है। स्वामी रामदेव से फ्रॉम चंडीगढ़। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को बढ़ावा देने की बात करते हुए वन नेशन वन एजुकेशन के नारे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सनातन बोध हो भारत की समग्र सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विरासत इसको एक साथ लेकर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि बच्चे इतिहास पढ़ें, मैथ में वैदिक साइंस पढ़ें और सभी बच्चों के अंदर भारत की एकता अखंडता का भाव हो, राष्ट्र धर्म राष्ट्र प्रेम राष्ट्रहित की सोच हो और हमारे आने वाली पीढ़ी डिवाइन सिटीजन बने। यह वीरवार को जीरकपुर में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हरियाणा और निश्चय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय स्कूल लीडर्स समिट 2024 में सुबह अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। वहीं पत्रकार के मजबूत लोकपाल संबंधी सवाल पर स्वामी ने कहा कि मजबूत लोकपाल के लिए आज ही उनका संघर्ष जारी है। वहीं निशा के अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली NCR में 100 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे और इन स्कूलों को निशा के क्वालिटी चार्टर के मैप करके सबसे पहले एक्सेस किया जाएगा। इनकी जो भी कमियां निकलेंगी वह मिलकर दूर की जाएंगी ताकि यह एक क्वालिटी स्कूल बन सके और पूरे देश के लिए एक मिसाल बने। OBC के ब्रांड एम्बेसडर बनने लगे नायब। अम्बाला से नायब सिंह सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने अभी कुल 2 महीने हुए हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी मिलनसार व जो लो प्रोफाइल व्यवहार के साथ साथ जनहित की ढेर सारी योजनाएं लागू करके पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में खासतौर पर OBC वर्ग में जो पकड़ बनाई है उससे उनका सियासी कद बढ़ा है। हरियाणा में हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री अमित शाह कई बार सैनी की पीठ थपथपा चुके हैं। अब तो अन्य प्रदेशों के कुछ मुख्यमंत्री भी उनकी कार्यशैली से प्रभावित होने लगे हैं। जिस तरह देश भर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान में फायर ब्रांड व हिंदुवादी नेता के तौर पर होने लगी है, उसी तरह भाजपा क्षेत्रों में नायब सैनी को बड़े OBC के तौर पर पहचाना जाने लगा है। हरियाणा से बाहर भी उनकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते कहा जाने लगा है कि आने वाले समय में पार्टी में OBC के ब्रांड एम्बेसडर साबित हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू की गई बिना खर्ची पर्ची की नौकरी देने की योजना को उन्होंने जमीन पर उतारा, जिससे प्रदेश के युवाओं में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। माना जाता है कि भी हाल ही में विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका खासा फायदा मिला है। भाजपा शासित प्रदेश और भी से बनाने लगे हैं। भाजपा क्षेत्रों का कहना है कि सैनिक की लंबी चौड़ी कदकाठी शादी वेशभूषा और हमेशा मुस्कुराते रहने की आदत एक चुंबकीय आकर्षण का काम करती है और वह उनसे मिलने को वालों को लगता ही नहीं कि वह किसी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। आमतौर पर हर किसी के लिए वह अपने निवास पर उपलब्ध होते हैं। मिलने वालों की भीड़ ज़्यादा होने की वजह से आमतौर पर वह खड़े खड़े ही फरियादियों से मिलते हैं ताकि कम वक्त में ज़्यादा लोगों को निपटाया जा सके। जानकारी के मुताबिक वह लोगों की अर्जियों पर पूरा संज्ञान लेते हैं। कहते हैं कि होने वाला काम हर हालत में हो जाता है, लेकिन नहीं होने वाला किसी भी हालत में नहीं होता। शायद ये वजह है कि जब कोई उनसे मिलकर बाहर आता है तो उसके चेहरे पर मायूसी की बजाय
एक तसल्ली का भाव देखने को मिलता है। सैनी को हैट्रिक का था पूरा भरोसा। अपने फ़ायदे के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का गलत इस्तेमाल न करें, राजनीतिक पार्टियां, शर्मा सेज। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर बीते 2 दिनों से संसद से लेकर सड़क तक मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मामले में जहां कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला हुआ है, तो वहीं भाजपा नेता भी कांग्रेस पर मनगढ़ंत आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में ब्राह्मण खाप हरियाणा के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि अपने सियासी फायदे के लिए किसी भी दल द्वारा डॉक्टर बी अम्बेडकर का नाम लेना गलत है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों को यह कोई हक नहीं है कि वे डॉक्टर अम्बेडकर का नाम गलत इस्तेमाल करें। डॉक्टर अम्बेडकर सर्व समाज के लिए पूजनीय और सर्व समाज के लिए प्रेरक हैं। गलत बयानबाजी डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मा को ठेस पहुंचा रही है। अशोक शर्मा ने कहा कि मेरे मन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक राष्ट्र निर्माता राष्ट्र निर्माण में सहयोग को देखते हुए बहुत से सवाल आते हैं और कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित लोगों को जनता के सामने लाने से डरते हैं। सदन के अंदर उनके नाम जो लेकर जो बवाल कर पार्टी ने मचाया निंदनीय है। ब्राह्मण खाप ऐसे राजनीतिक दलों को पुरजोर विरोध करती हैं। अशोक शर्मा ने कहा कि हमारे देश में वर्षों से एक पार्टी का एक छत्र राज रहा है, लेकिन लोकसभा के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की प्रतिमा उस पार्टी की सरकार ने न लगाकर स्वर्गीय एसपी सिंह सरकार से बाबा साहब की प्रतिमा को लोकसभा के सेंट्रल हॉल में स्थापित किया। संसद में हो हल्ला करके मुश्किल मचाने वाले इस बात का जवाब दें कि जब उनकी पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने डॉक्टर को सम्मान क्यों नहीं दिया। कांग्रेस ने नियुक्त किए जिला प्रभारी। चंडीगढ़ से धनखड़ के बेटे पर मामला हमला, 2 भाइयों सहित। पंचकुला से बजट से पहले वित्त मंत्री सीतारमण से सीएम सैनी करेंगे प्रदेश के विकास और अन्य मुद्दों पर चर्चा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। महंगाई झेलने के लिए हो जाए तैयार, चाय पत्ती से लेकर साबुन क्रीम सब हो जाएगा महंगा। नई दिल्ली से श्रीलंका ने 4 साल में पहली बार वाहनों के आयात से हटाया प्रतिबंध। भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए का होगा, गडकरी सेज। भारत और पाकिस्तान अपने मैच तटस्थ स्थल पर खेलेंगे, पिता का दावा, बेटे का हो रहा था अपमान। तो ये है आपकी हिंदी की खबरें। हिंदी में बताई गई क्या हो रहा है देश में, कहाँ कहाँ क्या क्या कब कब कैसे कैसे हो रहा है, ये है सारा विवरण जो आप अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। सिरसा केसरी, नगर परिषद के भ्रष्ट अधिकारी होंगे बेनकाब, सरकारी खजाने को चट करने में लगे अधिकारियों में ठेकेदारों की नहीं खैर। सिरसा से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़, डबल शहर में चोरी की वारदातें सुलझी। डबल से पुलिस सदस्यों की तरह भूषण ने मेडिकल स्टोर संचालकों की बैठक लेकर दिए कड़े निर्देश। सिरसा से बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने के विरोध में किया प्रदर्शन। सिरसा से नशे के प्रति चलाए गए अभियान को लेकर सीएम ने तरुण भाट पार्टी को सम्मानित किया। सिरसा से मानवाधिकार परिषद हरियाणा ट्रस्ट का बेटी बचाओ अभियान के संस्थापक तरुण भाटी को नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पंचकुला में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। जिले भर में नशा मुक्ति अभियान चला, लोगों को नशे के खिलाफ किया जागरूक। कालांवाली से पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में व्यक्ति को किया काबू। कालांवाली से उपायुक्त ने किया बैंक अधिकारी, ज्वेलर्स शॉप में पेट्रोल पंप संचालकों से बैठक का आयोजन। नगवाली से झरोखा इतिहास, चौधरी बंसीलाल ताऊ देवीलाल के बाद फूलका पहुंचने वाले चौथे मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। हरियाणा बीज विकास निगम किसान हित के लिए निरंतर प्रयासरत। देव कुमार शर्मा, किसानों से किए वायदे निभाएं, केंद्र सरकार। दिग्विजय चौटाला से स्वच्छता निरंतर चलने वाला अभियान, इसमें आमजन की भागीदारी जरूरी। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर लवप्रीत खरेका को सीएम नायब सिंह सैनी ने किया सम्मानित। सिरसा से पंचकुला में झरोखा इतिहास, चौधरी बंसीलाल ताऊ देवीलाल के बाद फूलका पहुंचने वाले चौथे मुख्यमंत्री होंगे
नायब सिंह सैनी तत्कालीन CMO पी चौटाला ने किसानों के हित में की थी बड़ी घोषणा। सिरसा इन दिनों जिले का गांव फूलका खासा चर्चा में है। नैलो का गढ़ रहे इस गांव का राजनीतिक इतिहास बड़ा रोचक है, क्योंकि इस गांव में से विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल, किसान मसीहा चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला सरीखे दिग्गज नेताओं का बड़ा लगाव रहा है। यही खास वजह है कि पिछले 5 दशकों में 5 बार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम यहाँ हो चुके हैं, जो गांव के नज़रिए से बड़ी उपलब्धि है। अब आगामी 24 दिसंबर को भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फूलका में एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जो गांव में पहुंचने वाले चौथे मुख्यमंत्री होंगे। CM सैनी के कार्यक्रमों को लेकर आज गाँववासियों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। चौधरी बंसीलाल ने गाँव में की थी चुनावी जनसभा। चौधरी देवीलाल का गांव से रहा है बेहद लगाव। रंगोई नाले 32 पुल मंजूर कर गए थे तत्कालीन CM चौटाला। CM सैनी 24 दिसंबर को महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी 24 दिसंबर को फूलका गांव में सामाजिक कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर सुरेश सिहरिया ने बताया कि CM सैनी इस दौरान गांव की एंट्री निर्मित पार्क में महाराज सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पूरे गांव में उत्साह है और उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री सैनी गांव को बड़ी सौगात देंगे। तो ये है आपकी खबरें सिरसा की हिंदी में। विकास की दरकरार, सरकार लाचार, आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे लोग रानिया से। हमें अपनी सोच को बदलना है, तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। कालांवाली से तैतीसवां याद मुर्शद 3 कैम्प का आयोजन। 458 मरीजों को मिली आंखों की रोशनी। 13,425 मरीजों की हुई जांच। सिरसा से 19 दिसंबर 2017 की दूसरी पातशाही परमपिता शास्त्री महाराज की भव्य स्मृति में आयोजित 33वीं याद मुर्शद परमपिता शास्त्री महाराज फ्री आई कैंप 458 लोगों की अंधेरी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आया। शास्त्राम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के तत्वावधान में बीती 12 से 15 दिसंबर तक शास्त्राम श्याम स्थान जी धाम में 13,425 मरीजों की जांच हुई। उन 458 लोगों की आंखों के ऑपरेशन हुए। जानकारी देते हुए शास्त्राम स्पेशलिस्ट अस्पताल के RMO डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि परमपिता शास्त्राम महाराज की पावन स्मृति में आयोजित शिविर में 13,425 मरीजों की नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा जांच की गई। वहीं मरीजों में से 458 लोगों की ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका गर्ग इंसान ने बताया कि शिविर में देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से आए नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सेवाएं दी तथा शिविर में मरीजों को उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं की सराहना की। के प्रवक्ता एडवोकेट संपूर्ण सिंह इंसान ने बताया कि पूज्य गुरु संत के पावन मार्गदर्शन में के द्वारा 167 मानव तबला के कार्य कर जा रहे हैं। मेला के दूसरे दिन से पूजने पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।